श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ त्रयश्चत्वारिंशत्तमं दशकं तृणावर्तवधवर्णनम्। त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथवोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ती माता निधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यचेष्टतगृहेषु निविष्टशङ्का। तावद्विदूरमुपकर्णितघोरघोषौ व्याजृम्बिपांसुपटली परिपूरिताशः वात्स्यावपुः सखिलदैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम्। उद्दामपांसुतिमिराहतदृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिदत्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद। तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमापतदनुक्षतपांसुघोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः। रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहं क्रन्दत्सुनन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात्। रोदाकुलास्तदनुगोपगणा बहिष्ठ पाषाणभृष्टभुवि देहमतिस्थविष्ठम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्त ममुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्त मलं हसन्तम्। ग्रावप्रपातपरिपिष्टगरिष्ठदेह भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरि दृष्टहासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादधोर्गिरिवरा दिवनीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन्नन्दादिगोपपरिरब्ध विचुम्बिताङ्गम् आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम्। भूयोऽपि खिन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सुतं नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकन्दनुजमेव मयि प्रधूम्द्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमु नोऽधुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।